Greetings, students. Hi, this is Satyaki from Indraprastha Law College, Greater Noida, and today's subject is Jurisprudence 1, and the topic that you're going to discuss is Kelsen's Theory of Analytical School of Jurisprudence, Lecture 1. And this is meant for LLB first sem and BA-LLB fifth sem students. Let us take a peek at Kelsen's pure theory of law. Students, please know this is the last of the propounders of the analytical school of jurisprudence. The first two we have already discussed, that is Austin and HLA Hart, and today we'll be doing Kelsen, which will complete the whole theory of analytical school of jurisprudence that has been introduced into the syllabus of jurisprudence 1. So let us take a peek at the Kelsen's pure theory of law. According to Kelsen, a theory of law should be uniform in nature. It should be applicable to all times and in all places. So, Kelsen talks about uniformity. Kelsen talks about uniformity, that it should be uniform and universal in nature. And Kelsen's theory of law is based on the universality of law, so that it should be implemented and is applicable at all times and in all places. According to him, law must be free from ethics, politics, history, sociology, etc. In other words, it must be pure. So in accordance to Kelsen's theory, law must be free of any philosophically inclined ethics, politics, history, sociology, etc. Or in other words, law must be pure in nature. It should not be connected to any form of ethics, politics, history, sociology, etc. Kelsen's theories regarding pure theory of law. Number 1. Pure theory is close to some other theories. Kelsen and Austin both are positivist. Hans Kelsen's pure theory of law is part of analytical positivism. Kelsen explains his theory by the method of analogy. It deals with existing fact, for example, what law is and not as it ought to be. Students, आप लोग को पता ही है आप लोग कि जब हम लोग एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में ऑस्टिन कहते हैं, क्योंकि केल्सन और ऑस्टिन सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं, दो ही पॉजिटिविस्ट है. तो इन अकॉर्डेंस टू द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या फिर लीगल पॉजिटिविज्म जो हम लोग पढ़े हैं, उनके तहत हम लोग को ये पता है कि ये जो लॉ की बात करते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ, what actual law is, because they do not talk about what law ought to be. So since Kelsen's pure theory of law is very much connected to the analytical positivism which is propounded by Austin himself, so Austin और Kelsen की theory या फिर उनका जो jurisprudence के जो perspective रहा है वो बहुत सेम है. तो वो सेम फीलिंग्स, सेम काइंड ऑफ फिलोसफी शेयर करते हैं. सो केल्सन का जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ रहा है, इट डील्स विद द एग्जिस्टिंग फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, लॉ जैसा है वैसा ही रहेगा. सो इट डील्स विद व्हाट लॉ इज एंड नॉट विद व्हाट लॉ ऑट टू बी. सेकेंडली, द थ्योरी ऑफ लॉ मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लॉ इटसेल्फ. Law itself consists of a mass of heterogeneous of rules and the function of theory of law, which is to relate them in a logical pattern and to recognize them in a single ordinarily unit. So here he talks about law as a mass of heterogeneous rules and the function of theory of law is like a logical pattern. सो एक यूनिट होगा, एक लॉजिकल पैटर्न के तहत लॉ को कनेक्ट किया जाएगा. सो हियर थ्योरी केल्सन टॉक्स अबाउट रैशनैलिटी, कि एक साइंटिफिक अप्रोच रहेगा, लॉ एज इट इज़ है वैसा ही रहेगा, और एक लॉजिकल पैटर्न के तहत उनको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा इन अ सिंगल ऑर्डिनरी यूनिट. Theory of law should be uniform. According to Kelsen, a theory of law should be uniform. For example, it should be applicable at all times and in all places. So, Kelsen की theory talks about universality. It talks about uniformity. तो जब यूनिफॉर्मिटी और यूनिवर्सलिटी एप्लीकेबल होगा, इनके तहत जो एग्जाम्पल है वो है कि ये सब जगह एप्लीकेबल है,
हर जगह पे, हर टाइम पे इट इज़ implemented and applicable in nature. So, law should be uniform. Law is normative science. According to Kelsen's law is a normative science and it is not a natural science based on cause and effect like law of gravitation. So Kelsen कहता है law is a normative science. It is normative in nature. It is not like what it should be. For example, जब हम लोग नेचुरल लॉ की या फिर नेचुरल साइंस की बात करते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट थिंग. सो ही डज नॉट टॉक अबाउट अ कॉज एंड इफेक्ट थिंग, ही टॉक्स अबाउट अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ एवरीथिंग. और जब हम लोग नॉर्मेटिव की बात करते हैं विच इज़ कैलकुलेटिव इन नेचर, क्यूमुलेटिव इन नेचर, वो स्पेकुलेशन की बात करते हैं कि स्पेकुलेटेड साइंस ये क्या हो सकता है, कि कॉज एंड इफेक्ट का कोई जगह है नहीं लॉ पे. According to Kelsen, law is a normative science. Jurisprudence is the knowledge of norms. Law is a normative science. A norm of law is simply a proposition and hypothetical from a norm of a law has a distinct feature, and thus they are different from the science norm. See, science talks about the reality. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप सबको पता होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने बनाया था, जो न्यूटन ने मतलब इन्वेंट किया था, जो नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट के तहत होता है. जब कोई एप्पल गिरता है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही फॉलो करता है कि जब कुछ गिरेगा तो वो नीचे ही जाता है. दैट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, दैट इज़ द नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट दैट हैपन्स इन द नेचर इटसेल्फ, एंड दिस वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन. लेकिन केल्सन का जो नॉर्मेटिव थ्योरी रहा है, इट्स बेस्ड ऑन अ हाइपोथेटिकल थ्योरी. हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे ग्रैंड नॉर्म के बारे में, क्योंकि केल्सन का थ्योरी का नाम है ग्रैंड नॉर्म. वो एक पिरामिड की बात करते हैं जहाँ पे सबसे हायर ऑर्डर सबसे ऊपर रहता है, एंड ग्रेजुअली फ्रॉम द हायर नॉर्म्स वी मूव टुवर्ड्स द लोअर नॉर्म्स. ऑलराइट, सो ये जो थ्योरी रहा है इनको कहा जाता है ग्रैंड नॉर्म. और ये ग्रैंड नॉर्म एक पिरामिड की तरह होता है, वह इट इज़ काइंड ऑफ फॉलोज द पैटर्न ऑफ अ नॉर्मेटिव साइंस. और ये नॉर्मल जो नॉर्म्स है, क्योंकि नॉलेज ऑफ नॉर्म्स को लेके ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, जो हायरार्की के तहत ये ग्रैंड नॉर्म में पिरामिड में इनको सजाया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हायरार्की के तहत हायर नॉर्म्स रहता है, एंड ग्रेजुअली फ्रॉम द हायर नॉर्म्स इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग टू द लोअर नॉर्म्स इटसेल्फ. सो दिस इज नोन एज द ग्रैंड नॉर्म थ्योरी विच फॉलोज द नॉर्मेटिव साइंस ऑफ केल्सन्स लॉ. हायरार्की ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशन. फॉर केल्सन्स लॉ इज द नॉलेज ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशन. फिर से देखिए, ये जो ग्रैंड नॉर्म की हम बात कर रहे थे, इनका डेफिनेशन यही होगा कि केल्सन्स लॉ इज द नॉलेज ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशन. ही डज नॉट वांट टू इंक्लूड इन हिज थ्योरी व्हाट ऑट टू बी, बट फॉर हिम law is a theory of analysis that is free from all ethical and political judgment of value. So this sums up the whole definitions of Kelsen's pure theory of law, because Kelsen talks about a normative law which is universal in nature, which is normative in nature, therefore it is applicable at all times and at all places. And Kelsen's pure theory of law talks about what law is and does not talk about what law ought to be. And secondly, it cannot be connected and it should be free of any form of ethics, morality, science, philosophy, sociology, or any forms of other aspect. Must not be connected to the pure theory of law. It should be pure in nature. We should talk about the hierarchy of normative relations. जो ग्रैंड नॉर्म की बात हम लोग कर रहे थे, उनके तहत उन्होंने अपना ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को प्रोपाउंड किया है. So, features of Kelsen's theory. Number 1, it reduces chaos and multiplicity to unity. The aim of pure theory of law is to reduce chaos and multiplicity to unity. Secondly, legal theory as a science of what law is and not what law ought to be. Pure theory of law deals with knowledge of law जैसा है वैसा ही रहेगा, and it is not concerned with law क्या होगा, क्या बनेगा, क्या हो सकता है. ये सब रिजेक्टेड है, क्योंकि लीगल पॉजिटिविज्म खाली लॉ जैसा है वैसा ही रहेगा उनका ही बात कर रहा है. तो केल्सन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग व्हाट ऑस्टिन टेंड्स टू propose, that is what law is and the knowledge related to what law is, and that is what it should be, and it is not concerned about what law ought to be.
Thirdly, law as normative science. Theory considered as normative science and not natural science. So it talks about the speculative value of law. It does not talk about the natural science, जो हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नेचुरल साइंस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे केल्सन स्पेकुलेटिव या नॉर्मेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं. Number 4, effectiveness of not what out of scope. Legal theory as a theory of norms is not concerned with the effectiveness of legal norms. Fifthly, it is a formal theory confined to a particular system of positive law as actually in operation. Of course, it's a very much formal theory since it is very much hypothetical in nature, क्योंकि ग्रैंड नॉर्म थ्योरी एक hypothetical theory है जो speculative value या फिर normative value के ऊपर बना हुआ है. So it is applicable in a particular system where positive law is actually in operation. और positive law मतलब what law is. The relation of legal theory to a particular system of positive law is that of possible to actual law. So the relation, when we talk about a legal theory, the relativity of the legal theory in a particular system where positive law is considered to be the actual law or absolute law. So it is very much synonymous in nature, because when we talk about positive law मतलब actual law, और actual law को absolute law भी कहा जाता है. क्योंकि हम लोग जब एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग ने ये डिस्कस किया है कि जो एक्चुअल लॉ की बात करते हैं वो एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं. एब्सोल्यूट लॉ वही है जो एग्जिस्ट करता है. what law is when we talk about the actual law. So this whole theory or the whole system of legal theory is based on the connectivity or the relation between positive law, which is very much connected with the actual law, or absolute law. So यहाँ पे absolutism की बात करते हैं. कोई natural science की जगह नहीं है, कोई ethics, morality, sociology, political science की कोई जगह नहीं है. It is a pure theory of law, which is a scientific approach, which has a speculative aspect connected to it, where the hierarchy of norms are very much taken into account. And thus, this legal theory of framework is based upon this whole characteristics that we have discussed upon. So, this will be for it today class. Thank you.